Shri Ganeshaya Namo Namah. Greetings to everyone world over, all our brothers and sisters across the globe, wherever you are. Wishing you all a wonderful 2023. आप सभी को हमारे चेंबर ICSI इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री की तरफ से समस्त विश्व में बहुत बहुत शुभकामनाएं. We pray to Almighty that year 2023 should bring lots of happiness, lots of wellness, lots of good health, lots of positivity, and everything good for everyone world over, wherever you are. We wish to see you happy, your family happy, your neighbors happy, your community happy, your country to be happy. And can in 2023, world becomes a better place, more peaceful, and where we all understand who are we, why have we come on this planet, what are we doing on this planet, what we can do on this planet, and how it should be done, what we can do on this planet. With these words, ladies and gentlemen, this all is possible only by innovative education, futuristic education, pragmatic education, need-based education, family education, where everybody is a co-learner and everybody is trying to acquire the best of qualities and best of things from each other. Wishing you all a wonderful 2023. And from our chamber, we pray to Almighty that all of you should get your vision coming true, your dreams coming true, your passion coming true, and you progressing leaps and bounds in the year 2023. With these hopes and good wishes, let's bridge the gap of the universe where teachers, youth, trainers, coach, counselors, mentors, and at the same time, educators, all of us in the education ecosystem, how to shape the future, how to develop the future, and how should be the future of education, and what kind of an educators we need world over as far as future of education is concerned. With these words, hearty welcome to all of you. Monday, 2nd of January 2023, 8 p.m. That's India's time. We will be together in this journey. Try and bring more and more friends of yours on the group. All of us, we take the vision forward together. Vasudhaiv Kutumbakam. That means the whole world is one family. The whole world is together. And we extend very warm welcome. Today, on 2nd of January, the first person to join on the YouTube channel in 2023 with us is Sakshi Chauhan from Uttarakhand. And she's the winner of the evening with 1,000 rupees. And Sakshi also brings lots of other people with her. Second in this series is Anamika Suppa, and I hope she's from Sikkim. Then we have got Julie Suppa. That is the northeast part of India. Madams come from Manipur. Then we have got Vemuzo Vero. I presume she's from Nagaland. And all other dignitaries, those are joining us. We extend a very warm welcome. And something very interesting, 2023 seems to be more powerful with women empowerment and women taking a lead, and male members wake up and shake up. If you really want to bridge the gap, you got to run faster, because girls are more focused for their career, for their growth, for their education, and for their future. All of us, we have to work out. We have also got the post from Northeast youth, Northeast students. We are proud of you. You're wonderful. The future generation, you all are amazing. Let's move together. So we wish each one of you a wonderful happy new year with good health, happiness, peace, success, skills, innovation, empowerment. Keep learning, keep growing, and every day, every moment in 2023, that's what is the inspiration we all have got together. ICSI extends a very hearty welcome and a very warm welcome to each one of you. And let's move together with the International Chamber for Service Industry in 2023. Ladies and gentlemen, we have started with the New Education Policy 2020, the beginning of the new era.
29th of July 2020, the Honorable Prime Minister gave the green signal, and the new education policy now is in the phase of implementation, and we all are moving together. There are different facets: school education, higher education, technical education, vocational education, need-based education, futuristic education, technology-based education, all that we would be taking together. We also extend a very warm welcome on the YouTube to Babu Moshai. That is Anand Mukherjee, who is joining us. Whenever I think about Kolkata and whenever I think about Anand, that is a beautiful movie which was Rajesh Khanna and Amitabh Bachchan. And I always remember that song with the balloons where, Rajesh Khanna moves next to the coastal line. And I presume that is the beautiful coastal line of India, almost 6,500 kilometers long on the length and breadth, that is east and west. And home is the best, of course, we keep saying. But I remember Rajesh Khanna ji singing right over there at the Diga beach. Zindagi kaisi hai paheli hai, kabhi ye hasaye, kabhi ye rulaye. Zindagi. You got to keep laughing in 2023. All of us, we got to be happy, mentally happy, socially happy, physically happy, spiritually happy. And of course, you need economic wellness also. आपको एक अच्छा पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब या अच्छे पॉकेट मनी या आपको फुल टाइम सैलरी मिलना चाहिए. Now, when we talk about the new education policy, NEP 2020, from the teacher's perspective, because today's program, I'm going to be more making it from the B.Ed students' point of view, so that tomorrow when they become teachers, whether in India or globally or wherever they are, we should work out a strategy. And our chamber is working very hard how India can fill those gaps, because world over the population is aging, and what best our teachers can do. Our students, those are doing B.Ed at this point of time, how do they shape themselves? How do they prepare themselves? Because the new education policy 2020 is taking the perspective holistic when I talk about, because the arts, the commerce, the science, the craft, the culture, the games, the humanity, the music, the dancing, the language, the fitness, the literature, everything has been clubbed together as an integrated approach. And there is a less content, there's a more critical thinking, there is a problem solution. First of all, there's no problem in the world. It is only challenges what we have got, and we got to take on those challenges the best possible way. You got to be creative, you got to be innovative. तो क्या pedagogies हो, education को हम interesting कैसे बनाएं, experimental कैसे बनाएं, डिस्कवरी ओरिएंटेड कैसे बनाएं, लर्निंग सेंट्रिक कैसे बनाएं, holistic कैसे बनाएं, integrated and flexible कैसे बनाएं, and it should be joyful learning, enjoying all around, and it should be discussions based, and it should be basically activity-based education. That is something very important. Honorable Prime Minister also gave the vision during the pandemic. India is thinking, India is growing, India is becoming self-reliant, and we all have to contribute towards this, because Honorable Prime Minister of India has given the 5 pillars of the self-reliant India, how basically bold way, what reforms is the need of the hour which we have to do so that India can grow leaps and bounds. ICSI strongly believes in the holistic education, and where there is a confluence of the education, skills, and of course, technology adoption the best possible way. So ladies and gentlemen, education will now be more learning centric with the new education policy. Education got to be relevant to our day-to-day life. There got to be a purpose of education which we have to take. And Indian youth, you are amazing. हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो young boys and girls हैं, they are amazing. They are going to become the global assets. They will be traveling together. And let me, right on the second day of this year, share with all of you, we will be having lots of scholarships. We are working with a couple of universities abroad. We are working in the different countries. How do we work out a strategy where quite a few of you should get some kind of a scholarships, incentives, and kind of an encouragement so that you can move abroad and you can become the global asset. Our chamber is proud. We brought way back in 1994 India's first finishing school, because
एजुकेशन ड्राई नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग के साथ साथ स्टिमुलेटिंग होनी चाहिए, साथ साथ जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए. So our chamber brought long time back India's first finishing school for service industry, because we are a chamber for service industry. And when you look at ICSI, International Chamber for Service Industry, so over there we talks about, you know, how the services component should become better, how that should contribute towards India's economic growth, क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडियाज प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं. और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम कैसे छुएं, क्योंकि 3.3 ट्रिलियन के करीब आज हम हैं. तो अगले 2-3 साल के अंदर हाउ इंडिया शुड बिकम 5 ट्रिलियन, देन 10 ट्रिलियन, देन 15 ट्रिलियन एंड ऑल दैट. लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है, या देयर इज समथिंग बिहाइंड बिसाइड्स दैट एज वेल? India is already contributing a lot as a soft power, with the soft skills, with the technical skills, globally to help the entire world to become more peaceful. इसीलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमेशा बातचीत करते हैं कि लड़ाई समाधान नहीं है, आपको बैठ के बातचीत करनी होगी, एक माध्यम ढूंढना होगा और उससे आगे बढ़ना होगा. So in this finishing school, we are talking about your soft skills, your technical skills, that means your digital skills, your life skills, and lifelong learning. But there are certain parameters which we have taken into consideration. आपका talent क्या है, आपका passion क्या है, आपकी चाहत क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपकी पर्सनालिटी पर कैसे काम किया जाए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर कैसे काम किया जाए. और कोरोना के बाद सबको समझ आ जाना चाहिए, नाउ देयर इज नो कंपटीशन, इट्स अ कोलैबोरेशन. That's the way we have to work out. So develop your critical thinking and design thinking, and continuous lifelong learning, which we all have to take into consideration, is something very, very important, which we would like to consider. Some more people have joined us on the YouTube. That is Deepa Hazarika, Anjan Kumar Bora, Kim Kipkin, and Gohin, and then Habung Tayo, then Nancy Sangma, and Sakshi, and Joba Lakshmi. We extend a very warm welcome and wishing you all a wonderful Happy New Year. 2023 should be rocking. Each one of you should get good job, good pocket money, good internship, and work on your skills, work on your craft, work on your passion, and try and convert your passion into your profession. Pre-pandemic हमारा finishing school था, and that is for the teachers capacity building and youth empowerment. Post pandemic अगर हम आते हैं तो हमारे फिनिशिंग स्कूल में हर टीचर का, हर बच्चे का, हर स्टूडेंट्स का एक साइकोमेट्रिक एटीट्यूड को हम एवेल्युएट करके उनकी पर्सनालिटी, उनकी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज, उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स, उसके साथ साथ आपका ग्रुप डिस्कशंस, मॉक इंटरव्यूज, एंड योर क्रिएटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग, एंड उसी के साथ साथ योर हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, स्पिरिचुअलिटी, उसके ऊपर भी सारा काम करके हर बच्चे को एक ग्लोबल जर्नी के लिए तैयार करना. The acceleration of the digitalization as a result of the COVID आया, और कोविड के बाद एक बार आपने सबने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजी को आप लेकर चले, और हमारे दिमाग में बार बार ये बात आई कि यार फिनिशिंग स्कूल तो ब्रिक एंड मोटर है, अब हमें कुछ डिजिटल और आगे जाना पड़ेगा. अगर फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, बायो लैब है, कंप्यूटर लैब है, हर तरीके की लैब है, तो बच्चों के लिए इंस्पिरेशनल लैब क्यों नहीं है? इंस्पिरेशन लैब का मतलब यह है कि अंदर आते ही बच्चा पॉजिटिव हो, बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़े, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़े, स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन बढ़े, स्टूडेंट्स ज्यादा इनोवेटिव हों. Design thinking, critical thinking, adaptive learning, immersive learning, project-based learning, technology-based learning, joyful learning, and empathy-based learning. You know, all that kind of education ecosystem we should develop. That is something in every school, every college, every university, every ITI, polytechnic, vocational training center, SSCs, everybody to depart. They adopt the concept of inspirational lab, which is a brainchild of ICSI. अब यहां पर बच्चों की मेंटल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, प्रोफेशनल वेलनेस, सोशल वेलनेस, इकोनॉमिक वेलनेस, इन सब के ऊपर काम करना और इकट्ठे बच्चों को लेकर चलना. तो ये सब चीजों को जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे बच्चे बहुत डायनेमिक हैं,
और हम इसको लेकर आगे चल सकते हैं। सो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचर्स एंड द यूथ थ्रू इंस्पिरेशनल लैब, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आप नेचर के साथ रहिए, पेड़ों के पास जाइए, पेड़ पौधों से मिलिए, फ्लोरा एंड फौना को देखिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज गॉट ए वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी। जितनी भी आप आयुर्वेदा की बातचीत करते हैं, उसके मैक्सिमम मेडिसिनल प्लांट्स नॉर्थ ईस्ट में है। Do you know what kind of a treasure we have got? And Arunachal Pradesh state has got the maximum green cover as compared to other places in India. हमको water management करना होगा, हमको waste to resource management करना होगा। Climate change की हम बातचीत करते हैं, we have to understand कहीं आग लगी है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा है, कहीं excessive rain हो रही है। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? All of us, we have to think about it, and the climate change also we have to take into consideration. That is something very important. It should not be separate subject. It should be integral part of the education. अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के टाइम में सबको बोला कि भाई भारत में कम से कम 15 जगह तो जाकर देखो, कम से कम एटलीस्ट यू शुड ट्रैवल टू 15 प्लेसेस। वैसे ही उन्होंने एनआरआई को कहा कि हर एनआरआई अपने साथ कम से कम 5 लोगों को लेकर आए। कैन यू इमेजिन व्हाट वंडर्स कैन बी डन? और मुझे कई बार ये बात समझ नहीं आती है कि टूरिज्म, जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट क्यों है? इंडिया की आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हमारे डांसेस, हमारा म्यूजिक, हमारे कुजीन, हमारे हैंडीक्राफ्ट, हमारे सोविनियर्स, अरे ये सब चीजों को जब लेकर जाते हैं, जो कल्चरल डाइवर्सिटी और रिचनेस है इंडिया की, why not NCERT should come out with a book of domestic tourism, which should be integral part of our education ecosystem. जैसे हम कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप नॉवल पढ़ते होंगे, आप कोई ऑडियो बुक सुनते होंगे यूट्यूब के ऊपर, आप कोई वीडियो देखते होंगे। अगर आप टूरिज्म का, आई एम टेलिंग यू, reaching at this particular age, right up till today, I have not seen my entire India. There is so much to see. Although I still recall way back in 1997, I traveled for 6 months at a stretch by a car, road journey, organizing All India Tourism Quiz Contest and going around. लेकिन मैं भारत पूरा नहीं देख पाया 6 महीने में भी। भारत बहुत विशाल है, भारत बहुत ग्रेट है, भारत की डाइवर्सिटी बहुत ग्रेट है, भारत की हेरिटेज बहुत ग्रेट है, भारत की स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ग्रेट है, भारत की कल्चरल हेरिटेज बहुत ग्रेट है। We all have to understand that. And what I wish to share with all of you is, let's make certain things as a part of our education ecosystem. थ्योरी पढ़ाना, करिकुलम पढ़ाना, सब्जेक्ट को पूरा करना, ये एकेडमिक रिकॉर्ड पूरा हो जाए। अरे I think the policy makers and the people those are imparting that knowledge, all of us, we have to come together with corporate and we have to understand हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, ये सब कुछ। मुझे बचपन की चीज याद आ रही है। वे बैक इन 1972 मैं कभी पिक्चर देखने जाता था तो साइकिल से टिकट मिलती थी। मुझे आज भी याद है, दिल्ली के अंदर एक जगह है सुभाष नगर, वहां पर अगर आपके पास साइकिल है तो आपको लाइन में कहीं और नहीं खड़े होने पड़ेगी। आप अपनी साइकिल लगाइए, साइकिल के पैसे दीजिए, 10 पैसे 20 पैसे लगते थे, और साथ ही में आपको टिकट मिल जाती थी। व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट? यूटिलिटी। दैट मीन्स यू हैव टू अडेप्ट। जो कुछ हमारी जिंदगी में रोज घट रहा है, education should be integral part of that. Education and entertainment, they go together hand in hand. Carbon neutral, everybody talks about. Culture की मैंने आपसे बातचीत की, understanding cultural diversity is very important. और एक immersive learning है। आप सब समझ जाइए कि आने वाले वक्त के अंदर you have to work as a co-learner. There is no competition anymore. Health, wellness and spirituality, it's very important. Mind, body and soul. When we talk about it, remain positive, think positive, live positive, walk positive, talk positive, sleep positive, get up positive, eat positive, 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 positive. फिर भी अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव होता है तो होने दीजिए, देखी जाएगी। Tourism, culture, heritage, India's old civilization. Our chamber is working very hard, and by 27th September 2023, we are going to come out with the entire compendium of India, taking the entire cultural heritage in a pragmatic, in a novel-based kind of a thing which you will enjoy, India's domestic tourism.
आईसीएसआई की जो इंस्पिरेशनल लैब है, इट्स वर्किंग ऑन सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल, ट्रेड स्किल, ग्लोबल स्किल्स, क्योंकि हमको विश्व यात्रा के लिए सबको बनाना है। इंस्पिरेशनल लैब में म्यूजिक है, डांस है, गेम्स है, हैप्पीनेस है, ह्यूमर है, फन है, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, स्टोरी टेलिंग, स्टिमुलेशन, पैशन, टैलेंट डिस्प्ले, स्ट्रेस फ्री, टेक्नोलॉजी बेस्ड, वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड एंड आउटडोर नेचर बेस्ड, सब कुछ नेचर के साथ है। एजुकेशन टू बी मेड रेलिवेंट टू आवर डे टू डे लाइफ, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्किल सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, हर जगह जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। स्कूलों के अंदर अगर कोई खाली जगह है, कॉलेज में कोई खाली जगह है, वहां पर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन क्यों ना हो? लोगों को ये तो बच्चों को पता लगे जमीन के अंदर क्या उगता है और जमीन के ऊपर क्या उगता है। ऑल्दो कोरोना ने बहुत कुछ बता दिया, समझा दिया। ग्लोबल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर सर्विस इंडस्ट्री, B2B इज नो मोर बिजनेस टू बिजनेस, इट्स बैक टू बेसिक्स ऑफ लाइफ। ये हमने बातचीत की 10 स्टेप्स टू लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स की हम बातचीत करते हैं। अब ये 2023 शुरू हुआ है, सब लोग मेरे साथ बोले, दिस इज माई ईयर। बोलिए जहां पर भी आप हैं, दिस इज माई ईयर, दिस इज माई डिकेड। 2023 आ गया है, 2030 तक बहुत कुछ अचीव करना है। से टू योर सेल्फ, रिमेंबर you're born to win. Know yourself. What is your goal? Work toward your goal each day. And you have a right to be happy right in every moment. इस moment में भी जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, you have a right to be happy. And I always tell, because Abdul Kalam ji, the honorable past president, our former president of India, he used to say, dreams are not the one which come to you while you're sleeping. Dreams are the one which do not let you sleep. That is something important. Work toward your goal each day. That is something very, very important. Now, services exports की अगर हम बातचीत करते हैं तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में आपको समझना होगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग, world population is aging. There are going to be more older people. And what we would require is India being a youngistan, India being for young boys and girls, we have to work in the direction. Indians have to go abroad. Indians have to travel abroad. India has to work the entire world happiness. India has to help and support the global ecosystem. Because survival हर एक का बहुत ज्यादा जरूरी होगा. So when the world population is aging, there got to be a hand holding by Indians, and you got to, focus on human services exports. हमारी एजुकेशन स्किल्स की बातचीत करते हैं, वेलनेस की बातचीत करते हैं. अब देखिए, योगा वर्ल्ड ओवर हैज बीन एक्सेप्टेड, and entertainment, that is another industry, because you got to be happy. और ये देखिए, बारिश हो रही है, बादल आ रहे हैं, इस वर्षा का पानी नीचे आ रहा है धरती पर. ये आपको प्रभु ने पानी सबको बराबर दिया है, ये आप पे निर्भर करेगा. आप चम्मच में पानी लेते हैं, आप कप में पानी लेते हैं, आप गिलास में पानी लेते हैं, आप बकेट में पानी लेते हैं, या आप छतरी लगाते हैं और पानी को बहने देते हैं, आप उस बारिश का भी आनंद नहीं ले पाते. इट्स ऑल अप टू यू. God has made beautiful world. It's up to us. How do we shape ourselves? Don't compare yourself with anyone. अपनी तुलना किसी से मत कीजिए. You're very special. God has sent you for a special purpose. अब उसने अगर माल्टा बनाया है तो माल्टे का रोल अलग है, अगर एप्पल बनाया है तो एप्पल का रोल अलग है. आप जो भी फ्रूट खाते हैं, जो भी चीज खाते हैं, हर एक चीज का रोल अलग है. नेचर ने सब कुछ बनाया है. All locations, situations, families, they are not in same conditions. You got to respect that. जो हमारे घर का वातावरण है, जो हम अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने घर में हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं, that is something very important which we have to learn, we have to pick up. क्योंकि समाज में हम क्या बनते हैं, what brains, what is mind, what feelings and what are thoughts, ये भी एक दिमाग में बातचीत आती है. Now what is mind? अभी कई बार मैं बातचीत सोचता हूं कि ब्रेन क्या है और माइंड क्या है, मन क्या है और दिमाग क्या है, मस्तिष्क क्या है. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं. अब मेरे जो माइंड है, अब मैं उसमें अलग अलग अगर हिस्से लिखूं तो उसमें फेथ है, बिलीफ है, होप है, चैरिटी है, टेस्टिमनी है, फैमिली है, और इसके अलावा कुछ सर्विसेज हैं
जो मैं पूरे वर्ल्ड को देना चाहता हूं, तो क्या ब्रेन मन है या माइंड मन है? मुझे नहीं पता। ब्रेन अगर मस्तिष्क है, बिकॉज ब्रेन जो है वो एक ऑर्गन है, पर जो माइंड है वो एक ऑर्गन नहीं है। द ब्रेन जो है वो फिजिकल है, और जो माइंड है, क्या वो ब्रेन में रहता है या कहाँ रहता है शरीर में? द माइंड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द थॉट्स, परसेप्शंस, इमोशंस, डिटर्मिनेशन, memory, imagination that takes place within the brain. Mind is often used to refer especially to the thought processes of reasons. We all have to understand. I'm so very happy. Julie ma'am लिख रही हैं, this is my ear. Vamuzo Vero लिख रहे हैं, this is my ear. Esposa लिख रहे हैं, this is my ear. North East के सारे students लिख रहे हैं, this is our ear. Wow, that's great. I'm so very happy to meet all of you. Thank you. अब ह्यूमन माइंड क्या है? एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। चलिए आप अपने आप सोचिए, माइंड क्या मन है? अगर माइंड मन है तो ये कहां पर होता है? कॉन्शियसनेस क्या होती है? सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सोल क्या है? आत्मा जिसको आत्मन बोलते हैं। विजडम क्या है? इंटेलिजेंट क्या है? हार्ट क्या है? दिल क्या होता है? दिल क्यों धड़कता है? और किसी के आ जाने पे दिल तेज तेज क्यों धड़कता है, और किसी के चले जाने पे दिल परेशान क्यों होता है? इज इट ए साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड? एंड यू नो, जितने पोएटिक हैं और जितने भी रोमांटिक लोग हैं और जितने भी कंपैशनेट लोग हैं, जिनकी एम्पैथी है, उनका दिल कैसे होता है? कहते हैं इसका दिल बहुत बड़ा है, ये तो दिल वाला है। हम कहते हैं ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, याद होगा आपको? दिल दे के देखो, दिल दिया दर्द लिया, दिल ने फिर याद किया, दिल ने पुकारा। दिल पे बड़ी पिक्चरें बनी है। गुरदास मान जी का पे पहला गाना था, दिल का मामला है, दिल दा मामला है ना? द वर्ल्ड इज अ कैनवस फॉर योर इमेजिनेशन, और आप पेंटर हैं। देयर आर नो रूल्स, गेट टू वर्क। द लिमिटलेस पावर ऑफ द माइंड, जो मन है वो उड़ता है, कहां से कहां पहुंचता है। यू गॉट टू मास्टर योर माइंड, यू गॉट टू हैव अ माइंडफुल थिंकिंग, बी द कैप्टन ऑफ योर शिप। अपने मन को कैसे कंट्रोल करें? मन तो 1 मिनट के अंदर कनाडा पहुंच जाता है, 1 मिनट में अमेरिका पहुंच जाता है। और माइंडफुल क्या है और माइंडफुल क्या है, ये भी सोचा जाए। दोनों अलग अलग लिखे हैं। माइंड को मैनेज कैसे करें, माइंड को संभाले कैसे? माइंड के बारे में कहते हैं ना, इफ यू थिंक पॉजिटिवली, साउंड बिकम्स म्यूजिक, मूवमेंट बिकम्स डांस, smile becomes laughter, and mind becomes meditation, and life becomes a celebration. All of us, we have to understand. So keep learning, keep growing, always remain positive, be empathetic and compassionate to others, avoid all social junks, and life management begins with mind management. That is something very important, which we all have to think and we have to realize. Okay, the quality of your life is influenced by the quality of your thoughts. आपके विचार कैसे हैं? जैसे आपके विचार होंगे, दुनिया आपको वैसी ही नजर आएगी. And that's why you remember that at the end of every day, we always tell you, whatsoever you think, you become. And whatsoever is your thought process, it takes you towards that. Now, there are 5 things to quit right now. Trying to please everyone, fearing change, living in the past, putting yourself down, and overthinking. And positive thinker jo hai, they seize the invisible, they feel the intangible, and they achieve the impossible. Look at your goals and listen to your reaction within you. You can do, I can do, let's do together. And Vamuzo Vero likh rahe hain, an investment in knowledge pays the best interest. Julie ma'am likh rahi hain, education is one thing no one can take away from you. Anand Mukherjee likh rahe hain, this is my year and this is my decade. Prachi Kalita, this is my decade and this is my year. 4 psychological resources hain: hope, efficacy, resilience and optimism. इसके ऊपर जरूर विचार कीजिएगा. How to master your mind. You are the master of your life. Think positive, stay positive, work positive every day. That is something very, very important. Exercise daily, because whenever you get time, you must exercise. It is very, very important. Meditation.
Now, generally people say that meditation is very meaningful, and if you try it out, then you can live positive way, you can live healthy, you can explore wellness, and you can explore your potential. Be what you want the world to be. आप वो बनिए जैसा संसार आप देखना चाहते हैं, जैसे संसार की आप रचना करना चाहते हैं. To help your surroundings, first help yourself. Live, feel, and master these 5 things, and you will soon attract better in your life. You have to believe, you have to visualize, you have to have the dream board, you have to get focused on feeling good and acting as that you already have it. कि ये तो मैं अचीव कर चुका हूं या कर चुकी हूं. And you have to do the work, because उसके बगैर तो जिंदगी में कुछ नहीं है. Today, more than knowledge, skill matters, because it's the skill that guides us which knowledge to be used where. No problem if you have less knowledge, but it's more important to have the right skill and competencies in today's world, which we all have to understand. ये देखिए जो कार्ड यहाँ पर दिखाए हैं, नॉलेज ऊपर है, स्किल बेस के पास है. तो स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब स्किल कई तरह की है. सॉफ्ट स्किल की अगर हम बातचीत करते हैं, लीडरशिप स्किल से हम कॉम्पिटेंसीज पे जाते हैं. स्किल जैसे कोई अकेली स्किल होगी, कॉम्पिटेंसी होगी जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स होगी. आपकी अडेप्टेबिलिटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी रेजिलियंस, आपकी सेल्फ मैनेजमेंट. और 21st सेंचुरी की क्या स्किल्स हैं, आपकी कोर वैल्यूज क्या है. सोशल इमोशनल स्किल्स, लाइफ स्किल्स, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, आईसीटी, क्योंकि कंप्यूटर्स ये आपको सीखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा. Financial literacy is also very important. Entrepreneurship skills are very, very important. All the things you have to take into consideration. And we are getting a lot of inputs. Northeast students are writing. Ishita Shukla, anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Keep trying and learn from each experience. Julie Subha ma'am, a man's mind stretched by new ideas may never return to its original dimension. Yes, Subhalakshmi, the direction in which education starts a man will determine his future life. Absolutely. The only person who is educated is the one who has learned how to learn and how to change. That is something very important. The purpose of life skills. एक आपकी soft skill है, फिर एक आपकी life skills है, फिर technical skills है, फिर digital skills है. Now, what could be the secrets of life? The adventure of life is to learn. The purpose of life is to grow. The nature of life is to change. The challenge of life is to overcome. The essence of life is to care. The opportunity of life is to serve. The secret of life is to dare. The spice of life to be friend. The beauty of life is to give. And the joy of life is to love. Love everybody. Love everything. Whatsoever God has given. एक 5 क्वेश्चन बेसिक हमारे दिमाग में आते हैं. Who am I? Where am I from? What is the source? Why am I here on this planet? What can I do on this planet? Where am I going to go from this planet? So what, who, how, where, when, why? All these questions keep cropping. So who am I? इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व क्या है? मैं कौन हूं? मैं यहाँ क्यों आया हूं? मैं क्या कर रहा हूं या कर रही हूं? That is something very important. अब जो human beings हैं, उनके 6 characteristics हैं. Emotional, intuitive, self-centered, hopeful, motivated, and social. You got to understand that. और एक बात सोचिए, कोई old आदमी किसी नए पौधे को लगा रहा होता है, अपने son या grandson या अपनी daughter या granddaughter को साथ में लेकर, उसको पता है कि आज जो मैं पौधा लगा रहा हूं, इसका fruit मैं कभी नहीं खाऊंगा. लेकिन उसको ये पता है कि आने वाली जो दुनिया है, आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो नस्ल और प्रोजेनिटी है, they will have the fruit of it. A society grows great when the old men plant trees whose shade they know they will never sit in. One day, son, you will appreciate the truly important things in life, and that goes for daughter also and son also. Know your values. What really matters to you? At the end of the day, what really matters is that your loved ones are the well,
and they are done your best and that you are thankful. All you have, जो खुदा ने तुम्हें दिया है उसके लिए खुश रहो, जो नहीं दिया उसके लिए प्रयास करो, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड मत हो. Find the positive viewpoint in a negative situation. Positive mind, positive vibes, positive lives. You know, नहीं तो आप सोचते रहते हैं don't, bad, can't, what it happens, how, no, all that is negativity. Throw that away. Show compassion. ये देखिए, इस पक्षी ने अपना पंख फैलाकर उन छोटे बच्चों को किस तरीके से सारी चीज दी है. That is something very important which we all have to understand and add value and positivity to someone else's life. Take every opportunity to show love, kindness and compassion to others. 2023 आपका बिल्कुल अलग होना चाहिए. Practice gratitude. Gratitude is the best attitude. There's always something to be thankful for, even if it is simply that you are breathing and you know that you are breathing. जब तक ये श्वास चल रही है तब तक आपको संसार नजर आ रहा है, क्योंकि जिस ऊपर वाले ने भेजा है, बाबू मोशाय, आपको याद होना चाहिए कि जिस ऊपर वाले ने भेजा है वो किसी भी कठपुतली को कब किस समय अपने हिसाब से अपनी ही शरण में ले सकता है. यू डू नॉट नो अबाउट इट. लर्न टू टेक क्रिटिसिज्म इन अ हेल्दी वे. लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, आप सबको प्लीज नहीं कर सकते. नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो है, आई एम टेलिंग हिम द फिश स्टिंग्स, हम किसी को बोल रहे हैं. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, नो, लेट्स आस्क हिम टू बी मोर केयरफुल द नेक्स्ट टाइम ही बाइज फिश. देयर इज ओनली वन वे टू अवॉइड क्रिटिसिज्म. डू नथिंग, से नथिंग एंड बी नथिंग. लेकिन क्रिटिसिज्म तो होगा जब आप काम करेंगे, कोई बात नहीं. देयर इज अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, देयर इज अ पॉजिटिव वे टू टेल समवन. Learn how to recognize serious problem versus slight difficulties. How big is your problem? Is it small? Is it medium? Is it big? कुछ लोगों की आदत होती है वो छोटी चीज को बड़ा करके कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंपैथी लेते रहते हैं. मेरा वो बीमार है, मेरा वो बीमार है, मेरे उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी गाड़ी का पंक्चर हो गया है, मेरे घर में ये चीज ठीक नहीं है. You always try and get sympathy. 2023, let's start with a bang. Your problems are your problems. Leave them at home. Keep them away and talk positive. Keep learning. Learn. Never stop learning, because life never stops teaching you. Know your instinct, motivation. एक होते हैं intrinsic, एक होते हैं extrinsic. तो intrinsic motivation, enjoyment, purpose, growth, curiosity, passion, self-expression, fun. आपका interest और आपकी enjoyment कौन से काम को करने से होती है. इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप ये देखिए, दोनों तरफ पत्थर हैं, बीच में एक पत्थर है, और इस पत्थर पर ये महिला खड़ी है. ये पत्थर कभी भी नीचे खिसकता है. डू नॉट डेयर नॉट टू डेयर. लेकिन उसको ये पता है कई सदियों से ये पत्थर ऐसे ही इन दो पत्थरों के बीच में है, enjoying the unexpected, even when it's not what you wanted originally. ऐसा तो नहीं होगा कि जो आप चाहते हैं सब कुछ वैसा ही हो. What we think, we are. Our thoughts, our beliefs, our feelings, our actions. You can't live a positive life with negative mind. Your mind has to be positive. And positive mindset क्या है? That is the key to success and happiness. Because you have to understand, if you are positive, the world is positive. Being true to yourself, that is something very important. Always be true to yourself. Be happy and peaceful. Then only you can make a difference as a teacher, as an educator, as a counselor. So you got to have inner peace. Then only you can have external peace. और आपकी परेशानी आपके चेहरे पर नहीं आनी चाहिए. हैप्पीनेस कई तरीके की है. फिजिकल हैप्पीनेस, मेंटल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस. और कभी हमने इस बात को सोचा है? हम इतना स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, टेक्निकल सेशंस में, आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में, स्किल सेंटर में सिलेबाई बनाते रहते हैं. किसके लिए बना रहे हैं? यूथ के लिए. ओके, कभी हमने ये सोचा है यूथ हैप्पीनेस मैटर्स? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज टुडेज यूथ वांट. आज की युवा पीढ़ी क्या चाहती है? आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है? आज की युवा पीढ़ी को कैसा लगता है? There is something very important which you have to understand. Now, educators,
parents and the youth, all of us together. What's lost when we rush the kids through childhood? इतना कुछ उनको पढ़ा देते हैं, दिमाग भर देते हैं और इतना कुछ भर देते हैं कि बच्चे को यही समझ नहीं आती। और हम कभी ये नहीं सोचते कि आइसबर्ग ऑफ सक्सेसफुल एंड हैप्पीनेस क्या है। इज इट आईक्यू और इज इट ईक्यू? इज इट इंटेलिजेंट क्वोशेंट और इज इट इमोशनल क्वोशेंट? Imagine with all your mind, believe with all your heart, and achieve with all your might. History has always been shaped by the power of youth. Success to significance. Transform your life. If you cannot make your passion your profession, याद रखिएगा, ये देखिए दूर तक देख रहे हैं। If you cannot make your passion your profession, then make your profession your passion. That is something very important. Have faith in yourself and be positive. And when faith enters food, food becomes prasad. When faith enters water, water becomes amrit. When faith enters travel, the travel becomes tirath. When faith enters music, music becomes kirtan. When faith enters a house, house becomes a temple. When faith enters actions, actions become seva. And when faith enters in work, work becomes karma. And when faith enters a man or woman, the man and woman, they become human. That is something very important. Quality performance starts with a positive attitude. आज जितने भी लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, जहां पर भी हैं, आप विश्व के किसी कोने में भी हैं, गॉड ने 24 आवर्स सबको बराबर दिए हैं। आज के बाद 2023 में ये सोच लीजिए कि मैंने समाज के लिए अच्छा क्या करना है, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा क्या करना है, मैंने अपने जॉब में कैसे एक्सेल करना है, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स वर्क क्या करना है। दैट इज समथिंग। जो पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड है, ये देखिए पूरा संसार, ये देखिए संसार में अलग अलग देश, इन सबको आपकी जरूरत है, इन सबको आप चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, ट्रेनर्स, काउंसलर्स, कोच, मेंटोर्स वर्ल्ड ओवर जो चाहिए, इस ग्राफ से देखिए, ये यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक डाटाबेस है। और आपको समझना पड़ेगा कि 2030 तक क्या डिमांड है, कितने लोग बाहर चाहिए होंगे। वुड यू लाइक टू टीच अब्रॉड? वुड यू लाइक टू ट्रैवल अब्रॉड? Would you like to go abroad? Would you like to settle abroad? Would you like to take a short-term assignment? 3-4 साल आपने काम किया, ग्लोबल एक्सपीरियंस लिया, वापस अपने विलेज में आ गए और आपने अपने गांव, अपने शहर, अपने सेमी अर्बन एरिया, उसको आगे कैसे बढ़ाया। तो हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो काउंसलर्स हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, हमारे जो मेंटोर्स और कोच हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि देयर आर 4 मोड्स ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। एक तो यह है कि आप अपने घर पे बैठ के डिजिटल वे में, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड से आप जुड़ें, आप किसी से भी बातचीत करें और पूरे वर्ल्ड को अपने साथ जोड़कर यू कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज। और 2023 के अंदर फोकस्ड हो जाइए। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। आपको उसके लिए प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा, एफर्ट्स मारने होंगे, तभी आपको वो चीज मिल पाएगी। नंबर 2, आप 2-3 साल के लिए बाहर चले जाइए, अच्छी असाइनमेंट लीजिए, अच्छा काम कीजिए और उसके बाद इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आगे बढ़िए और वापस आके अपने घर के आसपास, अपनी कम्युनिटी, अपने शहर को और आगे लेकर चलिए। और उसके अलावा अगर हम मोड ऑफ सप्लाई देखते हैं, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4, कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर अपना ऑफिस खोल रही है, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। कोई कंपनी इंडिया की बाहर जा रही है, आप वहां भी काम कर सकते हैं। तो जो ग्लोबल लेबर मार्केट है, इट हैज विटनेस्ड, ये पैंडेमिक के बाद देयर इज अ फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। अर्लियर द डिमांड वाज ओनली फॉर इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे गूगल के हेड, माइक्रोसॉफ्ट के हेड और कुछ एक फाइनेंशियल हेड्स अभी वर्ल्ड बैंक के अंदर और ILF के, अपना ये जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर, IMF और ये बाकी जगहों में इंडियंस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल वर्ल्ड ओवर। लेकिन अब हमारे टीचर्स की भी बाहर जरूरत है, हमारी नर्सेस की भी बाहर जरूरत है, हमारे केयर टेकर्स की भी बाहर जरूरत है। और इंडिया का खाना बड़ा करी वाला स्वाद होता है,
इंडिया के शेफ्स की भी बाहर जरूरत है, और मल्टीटास्किंग के लिए बहुत सारे लोगों की बाहर जरूरत है। मल्टीटास्किंग बन जाइए, एक स्किल से काम नहीं बनेगा। हरफन मौला जिसको पहले कहते थे, वो क्या चीज है? यू हैव टू अंडरस्टैंड, India has become one of the most fertile zones as supplier of trained teachers, educators, coach, mentors, counselors, technocrats, moving globally and going world over. That is something very important. While educating foreign students, one need to understand and respect the cultural diversity. हर इंसान का faith अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान का धर्म अलग है, हर इंसान का पहनावा अलग है। अगर आप ग्लोबल ट्रेनर, टीचर्स, कोच, मास्टर ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप वर्ल्ड ओवर कल्चरल डाइवर्सिटीज को समझें और उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। ग्लोबल टीचर्स नीड a strong personality and a clear vision of the meaning of democracy today, when the dealing with diversity and plurality against the global dimension of education is needed. आपको बनना है future trainer, teachers, master trainer, and educator. Besides teaching one subject, teachers are also expected to informally mentor and introduce best practices, especially with respect to critical thinking. ये आपको सुपर सोचना है। टीचर्स आर नाउ co-learners, वो भी बच्चों के साथ सीख रहे हैं। पोस्ट पैंडेमिक बहुत चेंज आ गया है। लेट्स गेट प्रिपेयर्ड नाउ फॉर द ग्लोबल जर्नी। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, I come to the end of today's presentation. हम 2023 शुरू कर रहे हैं, and I wish to share with all of you the dream project of ICSI. हम 2023 के अंदर पूरी कंट्री में, विश्व भर में, वसुधैव कुटुंबकम में ICSI की इंस्पिरेशनल लैब को लेकर आ रहे हैं। बेस्ट पॉसिबल वे, what all we can do. Let's join. To the inspirational lab of ICSI Finishing School for Service Industry. The International Chamber for Service Industry, or ICSI, brought on ground India's first finishing school for the service industry in 1994. However, it has become an inspirational lab and turned completely digital post-pandemic. Here, the students link academics beyond syllabi. Their journey from effective communication to connecting skills, curiosity to creativity, along with soft skills, life skills, and technical skills. Health and wellness is another important component of the Inspirational Lab at ICSI. Inspirational Lab is an initiative of ICSI to develop a holistic approach in education transformation. Visit icsiindia.in. Welcome to the So, आप सभी ने इंस्पिरेशनल लैब को एंजॉय किया। Before I close today's session and I share with you, 14th of January is the annual convention of ICSI. We'll be bringing a lot of new things for you. I wish to thank on the YouTube channel Manisha Chaturvedi. Apply yourself, get all the education you can, but then, by God, do something. Don't just stand there. Make it happen is the comment of Manisha Chaturvedi on the YouTube. Nisha Agrawal, teachers open the doors, but you must enter by yourself. Nisha Maurya, what we learn with pleasure, we never forget. Nishank Maurya, okay, my apologies. Nanlai, the highest result of education is tolerant. Mohit Chaudhary, green evening to everybody from Pathankot, and Happy New Year to everybody. Great to you as well, Mohitji. Dilshan Wafa, good evening. Prachi Kalita, every skill you acquire doubles your odds of success. Wow, that's great. And then greetings from Gurdaspur. Wow, wonderful knowledge. And Nancy Sangma, skills and confidence that are an unconquered army. Yes, Rahul Chaudhary, good evening. Hearty welcome. Amazing platform. Thank you, Rahulji. Pariyansha, yes. Good evening, Pariyansha. Sunil Chaudhary, Radhe Radhe. Mohit Chaudhary, great. Sakshi, great. Sakshi, nice session. Amazing lab. Thank you. And Julie Subha ma'am, enlightening session. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining us today. I wish to share with all of you, world is a beautiful place and you can make it further better. You remember that we took a pledge
and we took an oath. We decided that 2023, we all are going to do amazing things. Can I make a request to you? आप अपने आप को तो संवारें ही, आप अपनी लाइफ को तो अपस्किल करें, लेकिन जितने लोग आपके आसपास आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी भी मदद कीजिए, उनको भी आगे लेकर आइए. Whatever we send the creative to you, do share with others. Increase your family. When we say Vasudhaiv Kutumbakam, that means the whole world is one family. All of us, we are together. I expect from each one of you that tomorrow at 8 p.m., you will bring at least one more person with you who should be the part of this journey. Welcome to the world of knowledge and happy learning. And let's join tomorrow evening at 8 p.m. again, yet another program. Thank you very much. Wishing you all once again a happy 2023. Enjoy, be brilliant, be creative, be innovative, be thoughtful, be pragmatic, and be positive. Jai Hind,